This is a different video, guys. So just spare me 5 minutes of your valuable time, and I promise I will make it worth it for you. So there is a very interesting proposal later in this video, but before that, let's see about today's trade. So there was no trade today as it was an expiry day. I usually avoid trading on expiry days. Let me show you the positions here. So there are no orders, as you can see, and the date you can check it out here. But I want you to see a trade I took on Monday, which was my first video I shot, but I did not upload it because of the background. But I can tell you that it can justify the potential of the setup I use. So let's see. सो हाई ऑल। सो अगर आप देखोगे आज का मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल था स्टार्टिंग में। जब ये फर्स्ट स्विंग बना रहा था तब आई थॉट कि ये तो आज कोई ट्रेड देगा नहीं। और हाँ, वैसे भी जो हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बना है। इट वाज अ मोमेंटम ट्रेड विच वी कैप्चर्ड। सो आई शो यू द पोजीशंस राइट हियर। तो आज का पीएनएल ये है, और जो हमने ट्रेड किया था वो स्ट्राइक प्राइस है 23,000। सो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस और जो एंट्री पॉइंट है वो ऑलरेडी मार्क्ड है। सो द एंट्री पॉइंट वाज दिस, द एंट्री प्राइसेस वर 209। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर्स में। सी 1017 पे, 209 पे। सो this was the entry candle. The reason for this trade was nothing but just momentum, because ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग तो था नहीं। जो हम अब ये अगर आप देखोगे तो बेसिकली रिवर्सल ट्रेड है। पर वी एक्सपेक्ट मच ऑफ अ रिजेक्शन एंड नॉट इम्पल्सिव कैंडल। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो स्विंग था इसके बाद अगर ये यहीं पर कंसोलिडेट करता या फिर एक रिजेक्शन लेता बाइंग साइड का, एंड देन अगर सेलिंग साइड से एक प्रेशर आता, तो फिर हम इसको रिवर्सल मान के इसके साथ जा सकते थे। पर ऐसा ना होते हुए यहाँ पर एक इम्पल्सिव कैंडल बन चुका था। और द ओनली रीज़न टू गो इनटू दिस ट्रेड इज दैट इट ऑलरेडी ब्रोक द लो ऑफ द डे। इस कैंडल ने जो है डे लो को ब्रेक कर दिया था। और उसके बाद ये जो कैंडल था, मैं इसको कैंडल बाय कैंडल ऑब्जर्व कर रहा था। सो दिस कैंडल इज समथिंग विच टेल्स के इसके बाद अगर कंटिन्यू करेगा तो थोड़ा सा और मोमेंटम गेन कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस वही हुआ है। पर उसके बाद जो है एक डोजी बनने के बाद यहाँ पर ऐसा एक सिग्नल्स मिल रहे थे, या फिर बोलो कि कंक्लूजन्स आ रहे थे कि यहाँ पर जो है अभी सेलिंग मोमेंटम स्लो हो चुका है। तो मैंने जो है इस कैंडल में एग्जिट लिया था। सो अगर आप देखोगे तो ये एक परफेक्ट ट्रेड जैसे बन गया है। बट इट वाज ऑल just based on my experience and not the setup itself. So आज का ट्रेड तो ये था। तो So as you all may have seen the trade, now let's come to the best part that I have mentioned earlier. So I keep mentioning the setup. It is just a part of technical analysis and it works for all the time frames. It is not limited to intraday or option trading. And in fact, it does work so much better for larger time frames. So can use it for any chart, any stock that you have seen in the market. So the thing is that you may be working in IT or any corporate job, but I can tell you that I can help you get the most out of your investments. And see, I'm not another trader, but I can change the way you see the market. You may have never seen how simple it is to get higher efficiency
out of your investments, and for that I need your support. So it's a simple barter. You help me and I help you in return, as I mentioned. So the thing is, you have to do only one thing, that whenever you watch the video, watch it until the end and then like it, because it will make the video reach the larger audience, and then my work begins. So what I'm gonna do is bring the quality content in the upcoming videos. So with that, I can tell you that you will be able to do very good with your investment, and it is going to show you how simple and easy it is, or effective the technical part of the investments is. So just please consider subscribing, as I'm going to do the things that I said just. And let me know in the comments which part did you like, or where can I improve. And lastly, that's all for today. Thanks for watching the video, and I will see you in the next one.